she's telling she's seeing Latha. That's नमस्कार, fascinating. आप सभी का अनुराग्यम के पटल पर स्वागत है। न केवल भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य को हम बढ़ावा देते हैं अनुराग्यम के पटल पर हम मानवता के मूल्यों को भी सराहते हैं और उनकी चर्चा भी करते हैं। क्योंकि this is something which we need to learn from each other, to be more compassionate towards life and bringing the belief of human qualities, human values on a much higher level. And today, as we observe the World Down Syndrome Day, we have two wonderful ladies who have been very supportive in each aspect of their life when it comes to assisting, supporting, and being sensitive towards the needs of specially abled children. कहते हैं माँ के चरणों में स्वर्ग होता है, पर मैं ये कहती हूँ कि माँ के हृदय में एक ऐसी दृढ़ संकल्प होता है कि अपने बच्चे को चाहे वो किसी भी स्थिति में हो उसे सशक्त बनाने के लिए कोई भी she never leaves a stone unturned, and that is what the beauty of being a mother. And today I feel privileged and proud, and from one mother to another, a very warm welcome to Latha ji and Navneeta ji, the founder of Nirvana Group, Nirvana Organization. Thank सबसे you. पहले Thank मैं लता जी को प्रणाम करती हूँ, शत शत प्रणाम करती हूँ कि जो एक क्वालिटी होती है मदर की, जो एक क्वालिटी होती है मदर की, जो अपने बच्चे को हर हाल में खुश तो देखना चाहती ही है, उसके स्वास्थ्य का, उसके भविष्य का, किस तरह से वो उसके साथ खड़ी रहती है हर पल। आप एक जीता जाता मिसाल हैं। आपका बहुत-बहुत अनुरागिन की टीम की तरफ से बहुत-बहुत स्वागत है। Thank you, Nidhi ji. And hello, Navanita. And it's a privilege to be here talking to you. And I'll say that to be here, I'm here to learn and share my experience with you all. Thank you. बिल्कुल, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और अब जो हमारी दूसरी शख्सियत हमारे साथ आज जुड़ी हैं, वो है नवीनता जी, जो कि निर्वाणा ग्रुप की ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर हैं। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है इस पटल में। बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ समझने को मिलेगा, और अपने हृदय में आज हम एक संवेदनशील भावना लेकर आज हम यहाँ प्रस्तुत भी हुए हैं और बहुत कुछ हम यहाँ आपसे लेकर जाएँगे। नवीनता जी, आपका स्वागत है। और हम ये चाहेंगे सबसे पहले कि आपका ये जो फाउंडेशन है, वो किस कार्य में कार्यरत है और वो क्या समाज के लिए क्या कर रहा है, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए क्या कर रहा है? सबसे पहले तो तहे दिल से आपका शुक्रिया निधि जी, जो आपने हमें, हमारे बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म पे आने का अवसर दिया, जिसके थ्रू ना केवल निर्वाणा फैमिली के लोग बल्कि दुनिया भर से ग्लोबली लोग हमें देख पाते हैं, सुन पाते हैं। रियली थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट to you and Sachin ji, who have always given us these wonderful opportunities to come and share our lives with you. And thank you, Latha ji, for coming today with Sanjana. It's a pleasure to see you both. It's such a privilege to see you both, actually. And we are looking forward to learn a lot from you. निर्वाणा फाउंडेशन एक ड्रीम था, एक माँ का एक स्वप्न था, जो आज एक ट्रस्ट का रूप ले चुका है। बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को है। मैं यहाँ पर कुछ सिखाने नहीं आई थी, सीखने ही आई थी, और वही है कि आज तक मैं बाकी मदर से सीखती चली आ रही हूँ। अपने बच्चों को मैं स्टार्स बोलती हूँ यहाँ पे, और माँओं को स्काई बोलती हूँ, क्योंकि इन्हीं आसमानों में हमारे बच्चे जगमगाते हैं। और निर्वाणा का ऑब्जेक्टिव ही है कि ऐसे बच्चों को प्लेटफॉर्म देना, ऐसे टैलेंटेड बच्चों को सोसाइटी का पार्ट बनाना, जिन्हें शायद ज्यादातर सोसाइटी एक्सेप्ट ना करके सिंपैथाइज करके छोड़ देती है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को सिंपैथी ना दी जाए, बल्कि सपोर्ट दिया जाए, सोसाइटी का मेन पार्ट बनाया जाए,
और हर उस जगह उनको जगह मिलनी चाहिए जहां वो ट्रूली डिजर्व करते हैं। तो निर्वाणा का अब तक का सफर जो 2 साल का रहा है वो 22 शोज का रहा है, अरे वाह, जहाँ पर हमने इन बच्चों के लिए ना केवल म्यूजिकल शोज ऑर्गेनाइज किए हैं, म्यूजिक, जी डांस, मॉडलिंग, पेंटिंग, कुकिंग और ई कॉमर्स में भी हम इन बच्चों को शामिल करते आए हैं और आगे जी, भी करते रहेंगे। हमारी बहुत यही बढ़िया। गुजारिश है पूरी सोसाइटी से कि आप हमें जिस भी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट कीजिए, ताकि हम इन बच्चों को वहां पहुंचा पाए जहां ये डिजर्व करते हैं आना। इनके साथ सिंपैथाइज नहीं, इनको सपोर्ट कीजिए और बहुत कुछ है इनसे सीखने को। आज हम लता जी से सीखेंगे कैसे उन्होंने संजना के साथ अपनी जर्नी को तय किया है और क्या कुछ हम सीख सकते हैं लता जी से आज देखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारी स्क्रीन पे हालांकि हम सिर्फ 3 जने नजर आ रहे हैं, बट मैं देख सकती हूँ कि लता जी के साथ उनकी डॉटर, उनकी आन बान शान, उनका अभिमान उनके साथ विराजमान है उनकी कुर्सी में बगल में। लता जी, एक बात मैं अपने दर्शकों को आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी कि डाउन सिंड्रोम हम बात करते हैं, हमारे दिमाग में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें पूर्ण रूप से नहीं पता। हमने एक टर्म सुना, उसको हमने सुन लिया कि और हम अपनी एक धारणा बनाते हैं। तो डाउन सिंड्रोम एक्चुअली है क्या? Actually, my daughter is MR with autistic. She's autistic. और क्या हम्म, होता एंड ऑटिज्म, उसमें क्या होता है कि दे विल बी इन देयर ओन वर्ल्ड। एक्चुअली उनका ओके, अलग दुनिया होती है, उनकी उनके अलग अलग दुनिया होती है और दुनिया होती है। वो अपने दुनिया में मस्त रहते हैं। And हम्म, when they are in their own world, and if they are let just be like that let them be in their ओके, own world, they will be in their own world. They won't come to you and ask that, yes, we want to come and be live like other normal people like. But it is a duty of parents or siblings, every society, to make an attempt to bring them from their world to our world. तो उनको यहाँ एक सवाल पूछना चाहूंगी। आप ये कह रहे हैं, लता जी एक सेकंड, आपने कहा वो अपनी दुनिया में है और हम अपनी दुनिया में हैं। तो हमें उन्हें अपनी दुनिया में क्यों लाना है? हो सकता है उनकी दुनिया हमसे बेहतर हो सकता है वहां और खुशनुमा माहौल हो, तो हम कैसे, हम अपने आप को उनकी दुनिया में क्यों नहीं ले जा सकते? नहीं, see, we have to live together, right? We can't live the, see, Right. suppose if 5 people are in a family, and if everyone is led to live in their own world, how will it be? How can it be called a family, right? So तो you हमें have to उनकी make an दुनिया को attempt. समझना पड़ेगा। Huh. And they don't know that they are in a different world. They don't know. And that has to be done by the parents or siblings, that उनको ये बताना पड़ेगा, ये समझाना पड़ेगा अपने तरीके से कि आपकी दुनिया अलग नहीं है, हमारी दुनिया अलग नहीं है, एक ही है। ओके, So that means we are part of the family. How we see in a family, as I said, that if one is living in one room, another is living, how will you feel? कनेक्टिविटी। The family, you feel that it's you won't feel like you're in a family. you're in a So family, bonding नहीं है एक, हाँ, you're bonding not on the nahi hai. same page। Yeah, जी, you're living under the same roof, but you're living separately. So same hota hai, same thing happens. So you have to bring them to your world and make them understand that, yes, you're equal to us, you are in our family, you are in our world, and for that one they word, need help. They need help. they So need to make support, they them need understand, assistance। yeah. So we need to make an attempt to do that. वंडरफुल, वंडरफुल। तो आपको संजना के किस उम्र में आपको ऐसा लगा कि शायद ये बच्ची जो है मेरी वो डाउन सिंड्रोम की स्थिति में है? निधि जी, आई करेक्ट यू, संजना इज नॉट डाउन सिंड्रोम, शी इज ऑटिस्टिक। लता जी ने अभी बोला और कि शी इज,
she's autistic. Autistic. She has definitely said me autistic, but we are also I was told that Down syndrome का भी एक हिस्सा है जो autistic उसमें आता है. तो आपको जब ऐसा कब महसूस हुआ कि आपकी डॉटर इस स्थिति से गुजर रही है, and how did you feel about it कि आप किस तरह से उसकी हेल्प कर सकते हैं? Do we have medical assistance also that can aid to improve the situation? Yes, the journey started in 95 actually, and in the beginning we And how never came to know that. Yeah, and how she old was was Sanjana? sorry. Yeah. How old was Sanjana that time? She was 1 year old. 1 year old when Okay. we came to know that she is a special need child. And Okay. as she was a precious baby for me, because Absolutely. before that I had two miscarriages and she was a precious baby to me. So Oh. in the beginning, we never came to know that she is a special need and she needs help and all that. But as the milestones delayed, the milestone got delayed, then we were able to know that something is not right. Not right. Because Absolutely. because when see, for a mother, she always has that उसकी इच्छा होती है कि बेबी मतलब बच्ची उसको माँ बुलाए, है ना? माँ बोला That is बिल्कुल the first बिल्कुल wish बिल्कुल. of a mother. And बहुत खूब. I never used to hear her voice. Nothing. Oh. Except when she used to cry, that time I used to hear her voice. Otherwise, nothing. She was non-verbal, totally non-verbal. And when I see as a mother, I had the wish that let me, I mean, she should call me Ma, Amma, like. So And I didn't know that she is going through all this. And I all used this. to make her, no, like you can say, forcing her to Amma bolo, Amma bolo. 14 quarter amount for you. Yes, Yeah, of yeah. I course. used to keep on pressurizing her. Bolo, bolo, bolo. Then I didn't know that she's not able to. She's making an attempt, but she's not able to. She's actually having some issue. And she used to cry. When I used to pressurize, she used to cry. And one day, I mean, I thought that something is not wrong. So let me, me and my husband, we thought we should, get it checked and all that. And almost 1 year, and we came to know that when the checkup, everything was done, we came to know that she's a special need child. She has some issue to be handled. Yeah. तो जब आपको पता चला कि हमारी जो बिटिया है वो इस स्थिति से गुजर रही है, तो क्या इसमें कुछ ऐसा मेडिकल असिस्टेंस भी है, कुछ दवाइयाँ, कुछ थेरेपीज, कुछ ऐसे सेशंस हो जो उसकी स्थिति को थोड़ा कंफर्टेबल बना दे? Yes, there are many. There are many like therapies, medicines. I mean, they say that when you go, I mean, when you take the child to a therapy center or checkup center, they will advise you to, first they'll take your history. They'll find out what is really going on with the child or baby, and they will advise. And with us, what happened was, I mean, we did all the checking everything. Even chromosomal study was done. There was Done. no Okay. issue at all. There was no issue at all. We No were not issue at able all. to understand what really is going on. Then we took her for a therapy center, everything, and we wanted her to talk, and we took her for this speech therapy. Everything was done, but nothing was. I mean, I don't say that therapy was wrong. What the other, I mean, the help was we were getting was not wrong, but I don't know. It didn't work. It didn't work for us. It didn't work for us. And they didn't advise any medicine for her. Till today, no, they didn't advise any medicine. No medicines for, And okay. yeah, and after that, what happened is she was the first child, and after almost, I mean, I told you as a milestone got delayed, even Delayed. the crawling got delayed. Delayed. Got delayed, Okay. and as a mother, I was like getting see the father. I used to share it with Anxiety, him that what is anxiety going on level. because I was alone at home, and we were not in Bangalore. We were somewhere else. And Okay. he's a doctor, you know how busy the doctors is. They Great are, option. I mean, profession is like that. He has to work, he has to go for work. And me and Sanjana used to be at home. And at that time, I spoke to myself and I thought that I should try something.
to make her move from one place to another. So क्या हुआ कि we had a teddy bear, small teddy bear someone has gifted to Sanjana. With that, I tried because she was very fond of that teddy bear, and we used to go to the balcony, and I used to keep the teddy on the one corner, and I used to make her, tempt her that you want this teddy bear, you have to move. Go to there. So like that, it went on for many days. Trust me, it went on for many days because with this special need, that time I understood that you really need patience and consistency in whatever you do. That is most important. ऐसा नहीं कि आपने कुछ सिखा दिया आज और कल आपका काम खत्म हो गया और रिजल्ट्स आने शुरू हो गए उसके। हाँ, नहीं कोई मिरेकल्स नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि बहुत हार्ड वर्क, परसिवियरेंस, you have to keep on doing that. And I started doing that. It went on for many days, and suddenly maybe she was so tempted. Suddenly one day she started crawling to reach to the teddy. And that day I understood that yes, it doesn't happen overnight. So this is what I have to follow to make her do anything. So that day I got that confidence in me that yes, a mother can also be a therapist. Absolutely, I believe that mothers are the best therapist because हम अमूमन जिंदगी में आम जिंदगी में भी जो mothers होती हैं वो किसी ना किसी तरीके से कोई ट्रिक लगा लो, कोई कुछ भी लगा लो, अपने बच्चे के लिए पता नहीं क्या कुछ करने को रेडी रहती है। और आपके चेहरे पे जो एक सौम्यता है, जब आप ये बोल रही थी आपके चेहरे पे जो एक सुकून आया कि आपने जब पहला स्टेप जो उस हर्डल को क्रॉस किया और वो पहला एक माइलस्टोन जो है आपने वहां पहुंचे, तो आपके चेहरे पे मैं वो सुकून देख पा रही हूँ। और मुझे मैं भी एक माँ हूँ और मैं इस बात को भली भांति अपने अंदर मतलब मैं महसूस कर सकती हूँ इस चीज को। तो जब आप कहीं ना कहीं आपको लगा कि अब इसमें बहुत कुछ मेहनत करके डेफिनेटली कुछ ना कुछ किया जा सकता है, तो निर्वाणा से आप कैसे जुड़े और आपकी मतलब किस तरह से आप अपनी बेटी में एक बदलाव देख पा रहे थे? See, I joined Nirvana very recently, I can say. Very recently I joined, but it is a short period, but I could see how the children are being, like really taken care of, their activities and the number of activities they are doing. And not only the children, the parents are showing so much of interest in whatever activities are given. I was so impressed. And thanks to Naveen Hadir, she's she's doing an immensely, I can say that a wonderful job in making the parents, yes, she's not pressurizing the parents that you should do this, you should do that, but माहौल ऐसा है कि आप खुद को आपको लगेगा कि हाँ ये बच्चा कर रहा है, हम मैं भी करूं और मैं अपने बच्चे से और ज्यादा अच्छे से वो एक्टिविटी कराऊं. That is the environment a special need child should have, and thanks to Navita for doing that, and I really appreciate that. नवीनता जी, अब एक सवाल आपके लिए, आप बच्चों की भली भांति देखभाल करती हैं और उनको उत्साहित करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं और उनको किसी तरह अपनी जो नए कार्य जो कर सकते हैं, वो एक्टिविटीज कर सकते हैं, उनको बढ़ावा देती हैं. तो ऐसा भी कुछ है जो जब बच्चे घर जाते हैं वापस अपने पेरेंट्स के पास, तो पेरेंट्स को भी आप गाइड करती हैं कि आप अपने बच्चों को इस तरह से ट्रीट करें या आप इस चीज को घर में करें? तो मतलब किस तरह से कुछ पेरेंट्स के लिए भी गाइडलाइन है आपके पास? निधि जी, पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि जितना एफर्ट्स पेरेंट्स खुद कर रहे हैं उतना शायद मैं नहीं कर रही हूँ. पेरेंट्स चाहे वो फादर हैं चाहे मदर हैं, जो उनकी मेहनत है उसके लिए तो कोई मेरे पास शब्द हैं ही नहीं. बिल्कुल बिल्कुल. और जहाँ तक मेरी बात है, मैं सिर्फ एक रास्ता, एक जरिया बना रही हूँ इन बच्चों के लिए ताकि ये लोग अपनी मंजिल तक पहुंच पाए. पेरेंट्स के लिए गाइडलाइन वैसे तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी. जैसे लता जी बता रहे हैं कि पेरेंट्स खुद ही
यहाँ पर एक बच्चे की एक माँ नहीं है, हमारी फैमिली में एक बच्चे की 10 माएँ हैं, 20 माएँ हैं। जो बच्चा निर्वाणा फैमिली में एंटर करता है, उसकी एक माँ रहती ही नहीं है। हाँ, नहीं होती है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी। हमारा पिछली बारी जब अनुराग्यम का होली फेस्टिवल चल रहा था, तो यहाँ जी जी। पर व्यूअर्स में से, हालांकि वो लेडी हमारे साथ कनेक्टेड नहीं थे, हम्म। उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ मैंने बच्चों को परफॉर्म करते देखा है, उन्हें बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने जी। हमारे बच्चों के लिए मिठाई भी भिजवाई आज। दिस अरे इज वाह, रियली वेरी स्वीट, very मतलब, good, एंड शी हैड बहुत सेंट इट बढ़िया। ऑल द वे फ्रॉम गुजरात। अरे एंड वाह, आई बहुत बढ़िया। आई फेल सो ओवरवेल्म कि एक लेडी, तो यहाँ पर आप सोचिए कि ये अपने बच्चों के लिए मीठा बनाना, उनकी पसंद का बनाना, घर में खुद बनाना, ये नहीं कि उन्होंने बनाना, मार्केट से खरीदा है, उन्होंने खुद हाँ, बनाकर हमारे बच्चों बिल्कुल। के लिए भेजा है। तो ये प्यार की भावना एक माँ ही दे सकती है। माँ तो ही दे यहाँ सकती पर है, हमारे बच्चों की एक माँ है ही नहीं। है ही तो नहीं। मैं उन सभी पेरेंट्स के ग्रुप में ही इन्वॉल्व हूँ, जहाँ मुझे भी हम्म, कई बार एडवाइसेस चाहिए रहती हैं, मुझे भी कुछ हाँ, सीखने को मिलता है, बहुत कुछ मिलता है इनफैक्ट। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। बिल्कुल, I'm सौ sure। बात की एक बात ये है कि हमारी निर्वाणा फैमिली में हर बच्चे को, हर माँ को अप्रिसिएशन मिलता है, इसीलिए जी जी। निर्वाणा है। इसीलिए हम लोग इकट्ठा हैं कि हम सबको एक दूसरे को मोटिवेट करना है, एक दूसरे से सीखना है, और एक हाँ है, दूसरे को सपोर्ट करना है। यहाँ पर बहुत। हम लोग का कोई कंपटीशन नहीं है। निर्वाणा टोटली एक बिल्कुल। नॉन जजमेंट एरिया है। हर हम्म। फूल जो यहाँ पे खिलता है ना, यहाँ पे उसकी अपनी एक अलग खुशबू है, जैसे एक बगीचे में होती है। तो कोई बहुत। कंपटीशन है तो खुशबू का है ना उसकी शेप का है। हर बच्चा अपने तरीके से ब्लूम कर रहा है, अपने टैलेंट के अकॉर्डिंगली सीख रहा है। उसको स्टेज हम दे रहे हैं ताकि उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, बिल्कुल ताकि कर सकते उसके, सबसे पहले तो निर्वाणा का काम है इन्हीं बच्चों के जो मदर्स हैं, क्योंकि मेन पार्ट मदर्स प्ले करते हैं। हैं। बिल्कुल। तो जब तक ना मदर्स का मेंटल हेल्थ ठीक हो, जब तक ना ओके। उनको अप्रिसिएशन मिले, तब तक हम्म, शायद वो उतने जोश और एंथुजियाज्म से अपने बच्चे को नर्चर नहीं कर पाएंगे। नहीं तो कर सबसे, पाएंगे। तो यहाँ हम सिर्फ बच्चों पे ही नहीं, उनकी माँओं पे भी काम करते हैं। आप उनको सकते भी हैं, ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज देते हैं जहाँ वो अपना टैलेंट दिखा सकती हैं, दिखा वो सकते अपनी ओपिनियंस दे सकते हैं, और फिर हम हैं। जी। उनको प्रोत्साहित करते हैं। दिस इज द वे वी आर वर्किंग। वंस दे आर हैप्पी, दे कैन कीप देयर चिल्ड्रन हैप्पी। दिस एब्सोल्युटली, इज, एब्सोल्युटली। मातृत्व की मिठास जो है वो एक माँ ही समझ सकती है। और बहुत सारे लोग यहाँ हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं और बहुत ही मतलब प्रेरित हो रहे हैं और उनका सब भाव विभोर हो रहा है और सब अपने अपने कमेंट्स दे रहे हैं। यहाँ एक आप दोनों से एक प्रश्न है कि चलिए, जैसे अब लता जी के तो सिंगल डॉटर है अभी, और बहुत सारे ऐसे परिवार भी होंगे जहाँ पे सिबलिंग्स भी होंगे और बिल्कुल। एक स्पेशली एबल्ड चाइल्ड भी होगा। तो उस समय माँ की स्थिति क्या है, क्योंकि उसको अटेंशन अपने दूसरे बच्चे को बहुत ज्यादा देनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं दूसरा बच्चा जो है, जो कि सपोर्टिव है, और वो थोड़ा निग्लेक्टेड फील करता है। तो हाउ डू यू डील विद अ सिचुएशन लाइक दैट? Actually, I have a son. ओके। ओके। He's younger to Sanjana, three and a half years अच्छा। younger to Sanjana, ओके and ओके he's a ओके। doctor too. He's a doctor अच्छा। and he's pursuing अरे his बाप graduation. रे, And वंडरफुल। trust me, having siblings is like a boon to a special need child, हम्म। because that is I'm the, you can say, example for that, living example. Because हम्म। I tried and tried many times. I mean, we tried therapy, everything to make Sanjana speak. हाँ हाँ। But after my son was born, and he was very, very talkative, very ओके। talkative. वेरी अब टॉकेटिव। जब एक बच्चा घर में होता है एंड उसकी दीदी या नो, बहुत when बोलते हैं। sister or brother was there, and she was non-verbal, as I said, she was non-verbal. हम्म। एंड वो देखता था कि घर में दीदी है लेकिन वो बोल नहीं रही है, उसके साथ बोल। खेल नहीं रही है। हम्म।
पता नहीं, and he felt that, see, in a house, when a sister and brother, that is a very special relation. Special relationship, very special bonding. Yeah, there, and he used to observe that my sister is not speaking, not like other children. Like he used to see other families that sister and brothers are playing and they're talking, they're fighting, everything. And he Everything. started observing that, and without me saying or my husband telling him, he used to go and sit with Sanjana and play. Although she never used to react to him or never used to Reacting. speak Okay. to him, और उसके as I said, उसकी अलग सी दुनिया होती थी, वो अपनी दुनिया में मस्त रहती थी. Although I used to keep her busy and with me all the time, All the and I used to time. take her everywhere and anywhere I used to go. See, this is one thing I say it is important to any special need parents that they should not leave the child within four walls. Absolutely. True. Whatever Very true. Very maybe, true. see, they think that they have behavior problems, so they leave the child, and not only leave the child, they hesitate to go out. Go They out. feel ashamed to face the Ashamed. society. Yes. Very true. सोसाइटी चाहे आपको कैसे भी ट्रीट करे, अच्छा ट्रीट करे, बुरा ट्रीट करे, बुरा कैसे भी treat ट्रीट करें. करे, लेकिन यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस टू Confidence. फेस द सोसाइटी, बिकॉज यू Absolutely. हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग. Absolutely. व्हाई तो इसमें व्हाई शुड आपका कुछ, हाँ बिल्कुल, व्हाई शुड ऐसा यू तो प्ले गलत द नहीं. विक्टिम? हाँ. Why should you play the victim? That is the question I Absolutely. ask all the special. Everyone. You Exactly. should not. You go out. And I have heard, I'm not complaining, but I have heard the special need parents saying that जब हम उसको बाहर लेके बाहर जाते लेके हैं, वो जाते हैं. मजाक उड़ाते हैं, वो हंसते हैं, वो कमेंट्स पास हाँ. करते हैं, जो हमें लगता है कि नो वी फील अशेम्ड. हाँ. दैट शुड नेवर बी डन. वो मानसिकता को नहीं बदलना होगा. Yes, to change their behavior, as I told you, from their world to our world, you you need to take them out, tell them that you are part of the society. You have all the right to go enjoy anywhere and everywhere as we do. Normal life. Lead a very normal life, like anyone else is leading. Take them out. Okay. I also used to take my daughter before my son was born also, and after that also I used to take her everywhere. Everywhere. And when you travel in a bus, train, or anywhere, people used to pass comments. They, you know, they will see that. See, few will understand what is going on with the child. Not many will understand that it's a special need child. That's the reason it's behaving like that. So without knowing or unknowingly, they pass the comment. Suppose. But I also used to feel bad when people used to laugh, pass comments and all that. And one, they used to, ऐसे घूरते थे, बच्चे को ऐसे घूरते थे. Then as a mother, I used to feel bad. I used to really feel bad. And मैंने क्या किया, मैंने भी, मुझे लगा कि ऐसे घूर रहे, उनको समझ में नहीं आ रहा कि हमें बुरा लग रहा है. I also started staring at them. Staring at them. Giving them back what they have to. Yes. And I used to, I wanted to make them feel how it feels when somebody, stares at you. एक दो बार मैंने ऐसा किया. फिर मैं उसके बाद मैं बैठ के सोचने लगी, मैं सोच रही मैं कर क्या रही हूँ? What is this I am doing? Is this the correct way? Is this the correct way? This is not the way. This is not the way. अगर वो ऐसे कर रहे हैं, तो उनका हक है, वो जो बोले. See, this is a democratic country or whatever. People have the right to speak, to convey opinion or whatever. So that doesn't mean you should also behave the same way or you should also treat them the same way. Exactly. So I stopped doing that. And so many advisors used to come, even they used to come and tell me, the first thing they used to come and say, I think most of the parents would have experienced this. पता नहीं तुमने क्या पाप किया होगा पिछले जन्म में, इसलिए ऐसा हुआ है हमारे साथ. One thing we get to hear so often, if anything goes wrong. Yes, they used to come and tell me. See, after few days, I realized that this is the reality of the
life, that you as Right. a special need parent, you need to understand that this may go on wherever you go, this may Go. go on. So you need to face the society. Face the society. Whatever they say, whatever they do, that doesn't mean you should go and fight with them. Why are see, as a human being, you always feel that अगर किसी ने कुछ आके हमसे हमारे बारे में बुरा भला कह दिया तो We react. We first thing is react. we won't fight. Why you are speaking to me like that? Why you are commenting like that? So Right. then I understood that this is not the way. That Hmm. I learned from my daughter. See, I used to Hmm. observe her. She used to sit and play. And if somebody pass comments, if somebody makes fun, if somebody laughs, Hmm. she just used to look at them and give us beautiful smile. My. Oh wow. और मैं सोचती रही, अरे यार ये तुम्हारी मजाक उड़ा रहे हैं, फिर भी उनको स्माइल दे रहे हो. Then, Hmm. as a mother, when I started thinking why that is happening. Then Hmm. something struck my mind that आप मुझे जो भी स्पेशल नीड कह रहे हो, ऐसे कह रहे हो, फिर भी Hmm. मैं आपको देख के हंस नहीं रही हूँ, आपको एक ब्यूटीफुल स्माइल दे रही हूँ. मान दे अब रही आप हूँ. सोचो, अब आप सोच, मतलब उसका शी इज कन्वेइंग दैट मैसेज टू देम दैट मुझे आप ऐसे बुला रहे हो, ऐसे स्पेशल नीड कह रहे हो, विकलांग, जो भी वर्ड्स दे यूज, सो कह हाँ रहे हाँ. हो, लेकिन मैं तन से ऐसी हूँ या बुद्धि मन से से ऐसे नहीं. विकलांग हूँ, बट बिल्कुल. थिंक दैट आप मन से ऐसे हो, विकलांग हो. बिल्कुल, बिल्कुल, राइट। कितनी बड़ी बात है और आपने कितनी सहजता से बात करी कि लोग हैं वो कहेंगे, उनकी सोच पे आप पहरा नहीं लगा सकते, उनकी सोच पे ताला नहीं लगा सकते आप, उनको कहने दीजिए। पर आप जब अपने बच्चे के लिए खड़े हैं और कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है आपने सोसाइटी को कि जब वो बच्चा जिसको हम कह रहे हैं कि स्पेशल नीड्स है, वो स्पेशली गिफ्टेड है इनफैक्ट, जब वो सोसाइटी को कह रहा है तुम मुझे कुछ भी दो, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूँ, मेरा काम है कि मैं खुशी बांटूं, मैं अंदर से जो खुशी महसूस कर रही हूँ मैं वो दुनिया को दिखाऊं, वो मैं स्प्रेड करूं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और आज ये बहुत बड़ी बात मैं यहाँ अपने दिल में लेके जा रही हूँ बिल्कुल, कि ये बहुत सुंदर एक बात कही कि हम जब सोसाइटी को रिएक्ट करते हैं, सोसाइटी एक्चुअली वांट्स अस कि हम ऐसे रिएक्ट करें, कि हमने आप वो घूर रहे हैं, वो कमेंट्स पास कर रहे हैं, तो हम रिटॉर्ट करें, हम उनको कोई ना कोई ऐसी बात की क्यों घूर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वो हमारी मानसिकता को देखना चाह रहे हैं, चेक करना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बच्चे ने इतनी बड़ी बात हमें समझाई है कि सोसाइटी समाज है वो तो कहेगा, कहने दो, आगे बढ़ जाओ, अपनी खुशी में मगन रहो, बस। बहुत सुंदर बात। और इसी बात को लेके मेरे मन में एक माँ के प्रति चार चंद पंक्तियां मैं जरूर कहूंगी, क्योंकि ये जो है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आप दोनों माएं हमारे साथ जुड़ी हैं, आप दोनों ही जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े उन सब के लिए बहुत बड़ा एक प्रेरणा स्रोत बनकर आई हैं। और माँ के चरणों को मैं ये चंद पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि सर्दी की धूप जैसी, ओस की बूंदों जैसी, चेहरे की सलवटों के पीछे मुस्कुराती हुई, माटी के दिए सी टिमटिमाती हुई, उदास मन पर उदास मन पर खुशी के चित्र उकेरती हुई, ऐसी होती है माँ। ममता स्नेह त्याग की माला को पिरोकर, सरलता का ताज पहनकर, सत्य और स्वाभिमान का तेज लेकर, ऐसे अवतरित होती है माँ, ऐसी होती है माँ। बहुत खूबसूरती से आपने समाज के एक ऐसे पहलू पर हमें आईना दिखाया है। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। और हमने ये भी सुना है कि आपने अपनी बिटिया को बहुत सारी कलाओं से सुसज्जित किया है। तो हम ये जानना चाहेंगे, अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे आपके श्रीमुख से कि आपने किस किस कलाओं में बच्चों को, अपनी बिटिया को ट्रेन किया है, और डेफिनेटली हम जानना चाहेंगे। And I used to see that she's very much interested in music and dance. अरे वाह, Understand? ब्यूटीफुल। So, with a special, when you have a special need child, you always have to give importance to first, you have to know what the child is or the baby is interested in first. जी। It's not that you are going to, what you want to do, you are not going to force the child to do. First, you need to know what the child is interested in. And I used to observe that she is very much interested in music and dance. Because although she was non-verbal, when जब भी मैं गाना चलाती थी, उसका पैर ऐसे, हिलने and शुरू हो hands जाता। were like, so I used to observe and I know that
then I thought that I should take her in that stream because she is interested. And if I go, see, suppose आप आपको भी किसी को भी अगर किसी रास्ते पे चल रहे होते हैं, किसी रास्ते पे चल रहे होते हैं, वहां कांटे भी होती है, मतलब फूल भी यू नो होते हैं। everything. Then if you take the child, if you want to take the child in that stream which it is interested in, so वहां पर बहुत सारी अड़चने आती है, that and see, it's not that you are going to see where you want to reach, but जो रास्ता होता है ना, वो कैसे पार करते हो, that is most important. And from the beginning, from childhood, I have that, because my parents have taught me to be strong and be consistent in whatever I do. Absolutely, Especially बहुत my parents, especially my father is have that the base, what that base he has put in my mind and made me so strong from the beginning, that he always used to let me know. We are three siblings, and okay. he used to treat us equally, and he always used to let us do what we wish to do. We wish to Not do. even one day he is तुम लड़की हो, तुम ये कर सकती हो, तुम लड़के हो, ऐसा कभी भी उन्होंने नहीं किया. So that is, see, when the base is very strong, you can do whatever you want, and you will get that confidence. With confidence, you can move on. Move on. Absolutely true. And he used to, gave that confidence that even now he's no more, he passed away, but even now, जैसे see, I can say that Amir Khan's movie is there, Dangal. उसमें एक that situation comes that the girl falls into the The river. water, और वो बोलते हैं कि जोर लगा बेटा, हर जगह तुझे बचाने अपने पापा नहीं आएगा. बिल्कुल ठीक बात कही, बिल्कुल ठीक बात. My father might not have said that cinematically or no, but same thing. When I saw that movie, when I saw that situation, I remembered my father, that so many years ago he taught me the same thing. See, whatever situation you are in, you have to face. You have to face. You have to face it. So, when I used to take my daughter, teach my daughter. See, in the beginning, as I told you, the society sometimes doesn't accept the special need child. Doesn't accept. But I ask the parents that first, they say that when we take them to a dance class, a music class, or anywhere, they don't accept our child. They don't accept it. But before that, I ask the parents one question. Ask yourself, have you accepted the child? Exactly. First, you need to accept your child. This is what I wanted to hear. Before accepting, आप खुद हिचकिचाते हो बाहर ले जाने से, या फिर कहीं फंक्शन में ले जाने के लिए. आप खुद ही एक्सेप्ट नहीं करते हो, और you expect the society to accept your child. Right. ऐसा कई बार होता है. They have their own reason that they may not entertain your child, because some classicals music होती है, classical, they have their own, so they may not. But I ask, what are you going to lose if you take them once and ask the teacher, whoever is teaching, that can you teach my child? Just make an attempt. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो ना बोलेंगे. अब जो पेरेंट्स को खुद ही सेल्फ डाउट होगा, तो वो कैसे सोसाइटी को बोलेंगे कि मेरे बच्चे को एक्सेप्ट करो आप? कोई नहीं करेगा. टेकिंग पहले तो जब वो बहुत छोटी थी, तो सी, आई एम नॉट ए डांसर और ए सिंगर और एनीथिंग, बट बिकॉज ऑफ हर आई स्टार्टेड सिंगिंग, आई स्टार्टेड डांसिंग इन फ्रंट ऑफ हर, सो दैट जब भी आज भी अगर मुझे कुछ सिखाना है उसे, तो मैं पहले शुरू हो जाती हूँ. बिल्कुल, बहुत बढ़िया. You setting an example for her. And even to hold a pencil and draw a line,
हाँ हाँ You can't force the child that one, I mean, all of a sudden you give a pencil to the child and say you draw a line. हाँ हो सकता है उसे इंटरेस्ट ना हो, सो ना हो। कैसे आप इंटरेस्ट क्रिएट करोगे उसमें? हम्म। यू टेक ए पेंसिल, यू ड्रॉ तो ए आप लाइन. हाँ बिल्कुल, आप अपनी डॉटर के लिए टेडी बेयर बन गई, जैसे आपने टेडी बेयर को टेम्प्ट किया और वो फिर उसने अपनी मूवमेंट दिखाई, तो वैसे यू वर सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर योर डॉटर। आपने खुद ही I used to say, गाना और डांस yeah, करना, I गाना used गाना to सब शुरू take a किया। pencil and draw a line, sit in front of her, whatever maybe she's doing, whether she's giving attention to me or not. I used to sit next to her and keep drawing lines. One, हम्म। one, 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 one. And that, not one day, not two day, many days I used to, just to create that, that inquisitor, to create an interest in her that yes, something can be done with the pencil, With the or pencil, something yes. can be done with the music, something can be done. I mean, when you hear the music, you can dance also. You can dance also. Yes, 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 yes. that I बहुत बढ़िया। started doing. That I started doing, and I never missed a chance that whenever हम्म। a chance comes to go on stage, even now, हाँ, including हाँ, me and my ओके। daughter, I never हाँ, leave a chance that I will go and ask whoever is हम्म, conducting the program or whoever is doing, I will, हम्म। without any hesitation, I will go and ask them, can my daughter be part of this? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें ऐसी ही सोच चाहिए, जब आप खुद अपने आप को एक इस तरह से प्रेजेंट करें कि वी आर नॉर्मल, वी आर अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, तो डेफिनेटली लोग भी आपको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत मतलब बहुत ही ऊंची सोच है आपकी। और नवीनता जी, मैं अब यहाँ आपसे पूछ रही हूँ, तो जब आप संस्था में कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे आप बताती हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो भी बच्चे गाना गाना चाहते हैं, या डांस या ड्राइंग या पेंटिंग, कुछ भी ऐसा, तो खाली पेरेंट्स होते हैं, और डू यू हैव पीपल हु आर voluntarily want to be associated with you, with your organization, and help you out in like supporting to organize them and all? Yes, of course. We have supporters not only at the national levels but international level also, and Okay, that we have collaborated with many special educators, trainers, teachers, doctors wow. from a globe. They keep on supporting us. Even we have doctors, pediatricians जो कि हमारे बच्चों के लिए गाइडलाइंस कुछ कुछ बनाकर वीडियो बाइट्स बनाकर भेजते रहते अरे, हैं, हाँ हाँ। so that parents should be aware of how things should be done. कई बारी हम्म। कुछ कंफ्यूजन्स रहती हैं बच्चों को मेडिसिन देने में भी कि हमें मेडिसिन कैसे फॉर हाँ, एग्जांपल कैसे देना है, सो हाँ ऐसी जी। छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे बच्चों के लिए पेरेंट्स के लिए यूजफुल रहें, ऐसे चीज़ें हम लोग शेयर करते रहते हैं ग्रुप में. देन वी हैव कोलैबोरेशंस विद few special educators in Delhi itself, and ओके। even art teachers, music teachers who are helping us, supporting us in organizing our events, बहुत and बढ़िया। that is how we are moving ahead. And बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स एक्चुअली हमारा काम देखकर खुद मोटिवेट हुए हैं और हमारे साथ जुड़ने के लिए आगे आए हैं. एंड इवन कि हमारे पास लंदन से हैं मोटिवेटर्स हैं, डॉक्टर्स हैं. अभी हम्म। ऑलमोस्ट 15 स्टेट्स के साथ हम लोग कनेक्टेड हैं. तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ज़रूर हमारे साथ ऐसे जुड़े हैं जो किसी ना किसी तरीके से हमें सपोर्ट करने के लिए आगे आ रहे हैं. नाउ that we have chief patterns, I would like anybody from here, हमारे ऑडियंस में से कोई हमारे निर्वाणा फैमिली को ज्वाइन करना चाहता है इन वट एवर कैपेसिटी दे कैन, तो हाँ वो हाँ, ज़रूर आगे आएँ और हमारे को सपोर्ट करें. प्लस जैसे लता बिल्कुल। जी कह रही हैं अपनी बेटी के बारे में कि वो कहीं मौका नहीं छोड़ती हैं पूछने के छोड़ती लिए हैं, कि बिल्कुल। जी है जी। ना. तो दिस इज समथिंग रियली इम्पोर्टेंट दैट एवरी मदर शुड, every parent should understand. Unless and until they themselves feel that their children are able to stand on the same platform, सेम तभी प्लेटफॉर्म। तभी हम इंटीग्रेटेड शोज, इंक्लूसिव शोज करवाते हैं. इन जी जी। बच्चों को भी महसूस हो कि हम सेम प्लेटफॉर्म पे हैं, अलग नहीं हैं, और जो हम्म। मेन स्ट्रीम से बच्चे आते हैं उनको भी ये लगना चाहिए कि ये भी हमारे जैसे हैं और हमें हाँ, इन्हीं के साथ मिलके कोलैबोरेशन में पार्टिसिपेट करना है. पार्टिसिपेट करती सिंस है, हाँ। डे 1 जब से मैंने निर्वाणा लॉन्च किया है, मेरे हर प्रोग्राम में आज तक
till date. Hmm. I have always included mainstream children. I've always done inclusive shows just for this point, that Point. yes, our children have a right, बट वो राइट तब मिलेगा जब हम खुद इस चीज को मानेंगे, एक्सेप्ट मानेंगे करेंगे बिल्कुल. कि हमारे बच्चे डिजर्व करते हैं, उन्हें बीच में लेके जाना है हमें. दिस इज व्हाट वी शुड आवर सेल्स फर्स्ट रियलाइज. आई हैव लर्न अ बहुत लॉट फ्रॉम पिताजी टुडे, एंड फॉर श्योर आई एम श्योर जो भी हमारे ऑडियंस है उनको भी बहुत कुछ सीखने समझने को मिला होगा. डेफिनेटली अनुरागियम टीम की तरफ से आप दोनों महान, मैं महान नहीं बोलूंगी, दोनों नहीं. माओ को बिल्कुल हृदय तल से मैं आपको प्रणाम करती हूँ. और ऐसी ही माएं ऐसी सोच के साथ जब हमारा देश आगे बढ़ेगा तो कोई बच्चा ऐसा नहीं है. हम सारे स्पेशली एबल्ड हैं किसी न किसी फील्ड में. हम सारे बिल्कुल. स्पेशली एबल्ड हैं किसी न किसी फील्ड में. हम ये सोचे कि हम उनसे ज्यादा हम पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, पर बहुत कुछ ऐसा, वो छोटी बच्ची जब आप ये कहते हो कि वो मुड़ के स्माइल करती है, ऐसी सोच कौन से बच्चे में आई थी? आप किसी बच्चे को बिल्कुल. डांट के देख लो, क्या वो आपको स्माइल करेगा? आप उसको कोई एक फिक्रा कस दो, क्या वो बच्चा स्माइल करेगा जो इस बिटिया ने करके दिखाया है? ये एक बहुत बड़ी सीख है जो हम सभी को लेनी चाहिए. तो हम ये समझते हैं कि जहाँ माएँ ऐसी हों और जहाँ हमारे पास नवीनता जैसी सोच की महिला हो, उस देश की तरक्की को, उसकी उन्नति को, मानवता के मूल्यों को हम किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, ये एक सोचने वाली बात है. और आज मैं जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जो हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे थे, सुन रहे थे, समझ रहे थे. और आप दोनों की बहुत बहुत सराहना कर रहे थे, आपकी हिम्मत की, पेशेंस, पर्सिस्टेंस, एवरीथिंग that goes a long way in constructing a nation which is full of passion and compassion for human beings around us. And मैं चाहूंगी कि हमारे नीति साथ जो जी, हमारे बैक स्टूडियो में है, प्लीज एक बार सॉरी सबके टू, फटाफट फटाफट मैसेजेस डाल दें. हाँ जी, बोलिए लता जी, प्लीज बोलिए. 2 मिनट अगर आप देंगे तो मैं कुछ बोलना चाहती हूँ. आपको 3 मिनट दिए. Thank you. And I told you, my daughter, I put her in a dance class. The Bollywood dance she started, and she's been part of group dances from many years. Many ओके. years. We were very fortunate to have found the dance class that they have taken her into their group, and she's dancing. And see, after a mother, when taking care of a special child, she forgets herself to take care हाँ of सर, herself, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा or आपने, maybe बिल्कुल the ठीक father, they forget. कहा. But हाँ हाँ. as Sanjana was growing, learning, I was also part of it. From her, I have learned many things, Many and things. many things. At a certain point of time, मैंने सोचा कि I always thought that the mother should take care of herself, nurture Then her talents too, nurture talents her too. talents too, take care of the child and nurture her talents too. So when I thought that, I had many, see, दबी हुई होती है कि आप कुछ करना चाहते बिल्कुल हो होती है. जिंदगी में, वो इच्छा दबी होती है, हर किसी में दबी होती है. सो उसको बाहर निकालना चाहिए जब भी आपको मौका बिल्कुल. मिले ना. तो दैट आई स्टार्टेड आफ्टर 50 in my life. अरे लवली लवली, आई लव दैट. After 50 I started, because my daughter was part of a skit called Udan, ओके. and that in our complex itself, Mrs. Sujata, she had announced that she needs few children to be part of the skit. And I went and asked her, can my daughter, because it was on a special need children, सेशंस. ओके. special need child. So I went and asked her, can my daughter be part of? Because instead of making a normal child to enact that role, can हाँ. my daughter be part of it? And she, with happiness, she said, yes, okay, she can be. And I promised her that I will take care of my child, how she will act, how she will, be part of the group. And I trained her, and voiceover was given. That was a huge hit. That Ah. it was a huge hit. And that day I thought that yes, she can be on stage. And Huge.
along with because I had that desire to be part of on stage. I all from the beginning I had that to be part of drama. इस सब में part मैं चल लेती थी. फिर हाँ आफ्टर सर्टेन एज यू फील दैट यस अरे यार बच्ची को देखना है, ये करना है, ये करना है, उसमें बिजी हो जाओ, भूल जाओ अपनी जो इच्छा है, वो टैलेंट है या हॉबी से भूल जाओ. देन आफ्टर 50 I said yes, I have to take care of myself also. I should also do what I want to do, and I was part of theater. I have done वाह plays in Kannada in my अरे mother tongue. I've done it, and one more monologue I did. Same हाँ Mrs. Sujata she took me as a part of that. So after that, all the ladies above 50 was part of that skit Wow. monologue. That Wonderful, is wonderful. लता जी बात सुनिए लता जी आज आप अपनी डॉटर को बहुत बड़ा थैंक यू बोलिए क्योंकि जो yes, ये yes, आपको नया जन्म मिला है ये उसकी वजह से मिला है आपको yes, ठीक है yes. ना That is why और That is मुझे I that always is what I thought always say, that we are special moms because of our children. Otherwise, we would have been just normal moms. नॉर्मल that is ऐसा what कुछ नहीं होता और God कन्नड़ा has में actually, yeah, God has chosen us. chosen us that's why I लता जी thought that हाँ जी we are each other's cheerleaders. That वो जो भी Yes. करती है मैं कहती हूँ वाह 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 क्या कर दिया आपने, और मैं भी जो भी करती हूँ literally she says Lata thank you whatever I do, she's very good very हाँ fine, she अरे says like अरे this अरे fine makes Lata a nice, connection she says. So that is more than any award or any prize or anything in my life. बिल्कुल This I And will just after that, interfere for a second. This हाँ thing, same my daughter also does. I must tell you, she is also autistic, and we हाँ all as family members have learned to appreciate others appreciate because yes of my daughter. हाँ This हाँ quality we were not having. not Actually, this having was not in our character to appreciate even small things. She does that, and this is what we learned from her. And now if anybody does not appreciate, she says us that हाँ आपने बोला नहीं है कि अच्छा है. So we have definitely to बहुत maintain that बढ़िया thing. बहुत बढ़िया हाँ and So after लता जी the theater, I started participating in, because I used to take my daughter for a certain walkathon, especially for special need children. I just ओके took her because I wanted her to be outside like with other children. I took her, and that made me get motivated that I should be part of walkathon, and I started walking, taking part in walkathons, and also started marathon later. अरे वाह लता जी एक wonderful. बात मुझे कन्नड़ा नहीं आती है मुझे कन्नड़ा नहीं आती है बस मैंने सिर्फ जीवन में एक सेंटेंस सीखा है कितना राइट है वो नहीं मालूम आप भाव को समझिएगा नानू निन्ना प्रीति मारती ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. हाँ ठीक है तो आप समझ Please, गए please translate. इट मीन्स आई लव यू Oh, So, thank you. wonderful. To say thank you, ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. To say thank you. नवनीत जी And ये after बिल्कुल marathon, आपको भी after हो जाता है marathon, I told you, sorry, after marathon, there was an event of sari run. Sari run. जो आपको यस साड़ी पहन के भागना हाँ पड़ेगा या बिल्कुल फिर हाँ जी मतलब walk. So there was हाँ an जी event, and I wanted to be a part because I always look for different things. न्यू एक ही चैलेंजेस चीज हो जाए तो मोनोटोनस हो जाती है, मुझे वो नहीं चाहिए जिंदगी में. So I always look for something different, to do something different. So I wanted to be a part of sari run, and I didn't want to leave my daughter and go be part of that हाँ sari run, because बढ़िया looking at me wearing saris, she has also developed that desire to wear saris and dress up. ओह वाओ Wow, वंडरफुल She's wonderful. very बहुत fond बढ़िया of getting dressed up and all that. So I took her. I thought first I will wear a Maharashtrian sari, the 9 yards की होती है ना. So I ओके wanted, because everyone wears sari, but my sari, whatever I dress up, it should be different. So I wanted डिफरेंट to go in that. Looking at me, she said, "No, I also want in the same 9 yards Dress. with that हाँ Maharashtrian katke जो बोलते हैं ना." So, and she was also, I made her wear in that style itself. We both went and participated. She walked 3 kilometers in a sari, 9 yard हाँ sari, and I ran 5 kilometers in the Maharashtrian sari. Wow, अरे wonderful, बहुत बढ़िया वो wonderful. भी बहुत सुबह खूबसूरत सुबह वो भी सुबह सुबह 6 बजे.
6 बजे 6 बजे, हाँ, हम लोग पूरा तैयार करके we enjoyed like anything. And thanks to my family, my husband was the backbone. He's always being a backbone. He always, encourages whatever I do. Like, see, in the beginning, my father used to be like that, and after marriage, my husband, I see the same qualities of my father. That encouraging, he never says no to anything. Whatever you do, he knows that whatever I do, I mean, I'll be consistent. I'll do that, and he always encourages. And also my son, he always, although वो बहुत ही छोटा है मेरे से obviously, but he speaks now. Whatever he speaks, no, that acts like a medicine to me in my life, for entire life, because there are so many instances that has happened which made me, live my life in Live a my life different way, accordingly, to look differently. at the society in a different way. And I always tell him that, yes, because of you, because of him, Sanjana started speaking, because Speaking. of him Wow. only. Because he used to go and sit with her and say, दीदी बोलो ये वो, हाँ, हाँ, उसके हाँ. इर्द गिर्द रहता था, बोलता था. And I don't know, suddenly one day she started speaking. It was Speaking. like I was like looking who is speaking, like who is around me speaking like this. I mean, the words started Hmm. coming out from her Coming mouth. out. Two letter amma, appa, everything came up in Hmm. one stretch. So I Hmm. always tell Wow. him, because of you, Sanjana, and even today he takes care of my daughter like anything, anything. Anything. Obviously, siblings are needed. That's why I learned the Speak so importance, much and I always about tell that siblings, uh, because of them, there is obviously it will help. And एक minute और लेती हूँ, because today is a poetry day. I've written few lines, not on the G. mother, but I'll just read if you give me. Please do, please do. बादल घेरे हुए तो क्या, उजाला हाँ. बांट रहा है चंदा. बादल Wow. घेरे हुए तो क्या, उजाला बांट रहा है चंदा. सीख दे रहा है, डटे रहो जब जिंदगी हो पेचीदा. अरे सीख वाह. दे रहा है, डटे रहो जब जिंदगी हो पेचीदा. सामना करोगे तो मसला कोई भी हो, सामना करोगे तो मसला कोई भी हो, भागेगा कहकर अलविदा. भागेगा हाँ. कहकर अलविदा. जिंदगी का लुफ्त उठाओ, जिंदगी का लुफ्त उठाओ. हालत कुछ भी हो मौजूदा, हालत कुछ भी हो मौजूदा. थैंक यू. बहुत बढ़िया, Wow. बहुत ही Wonderful. बढ़िया, बहुत Wonderful. ही उम्दा, विद सो मच इंस्पिरेशन. एंड जब आप ये कहते हैं कि मेरे बेटे ने बहुत कुछ वो उसके साथ रहता है, इट स्पीक्स सो मच अबाउट योर अपब्रिंगिंग, किस तरह से Yes. आपने अपने बच्चों में संस्कार दिए हैं. इट टॉक्स सो मच अबाउट इट. And thank you so much, wonderful ladies, wonderful mothers, and with Thank such a you. positive attitude towards life and humanity. I thank from on behalf of the entire team of Anuragyam. This was a session which will always be very close to our hearts. And talking to you has infused so much positivity in all of us. And I'm sure our listeners must have felt the same. Thank you so much once again for being with us and Thank honoring you. our platform, Anuragyam. Thank you Have a so good Thank much day. you for so giving much, us Stay this Didi. It was platform. Thank wonderful you. talking to you and interacting with you. safe. Thank you, Naveen Sadi, for this wonderful Thank opportunity. And most thank you so most much. welcome, Thank you Latha so ji. much. Thank you. Thank Thank you you. so much. Thank Thank you. you. Thank you.